अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साद अल्लाहवाला है। आज हम एक और स्टार्टअप ग्रेन कराची के पॉडकास्ट में हैं, फाइट साइड चैट विद आकिब सैयद, अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन हु आई जस्ट गॉट टू बी फ्रेंड्स विद वेरी recently and very so much to learn from him, so such amazing journey. इनका लिंक्डइन पे जाए तो मतलब नीचे ही जाता रहता बंदा कि क्या क्या नहीं किया इन्होंने। तो आकिब भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। Most welcome. It's an honor to be here. नहीं, it's our honor to have you. He's also joining on our Turkey program, so do join. अच्छा, तो आकिब भाई, आपकी जब हम लिंक्डइन देखते हैं तो उसमें OLX भी है, उसमें वावा कार्स भी है, उसमें MYCART भी है, उसमें IBL भी है, तो आजकल आपका सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस की कंपनी भी है। तो आई वांट टू नो हाउ यू स्टार्टेड ऑफ, क्योंकि इतना सब कुछ किया, शुरू कहाँ हुआ? और प्लस आपको देखते हैं तो लगता है कोई 30 साल के हैं लेकिन ये धोखा है। धोखा, इनकी पिक्चर हर वक्त धोखा दे जाती है। तो कहाँ बड़े हुए, कहाँ पे पढ़ा और कैसे शुरू हुआ? So thank you so much first of all, क्योंकि मुझे ये आई थिंक ये एक्सक्लूसिव है, क्योंकि मैंने कभी आज तक नहीं बताया कि मैंने ज़िंदगी में क्या क्या किया, और नॉट इन एन एनवायरनमेंट वेयर इट्स वेरी कंफर्टेबल। बट हाँ, शुरू ऐसे हुआ कि पैदाइश वगैरह तो पेशावर में। अच्छा। तो बैकग्राउंड से मैं पठान कह लें वो हूँ, और क्योंकि वो बचा नहीं, क्योंकि मैं कराची आ गया बहुत छोटी उम्र में। तो क्या उम्र थी? मैं हूँ तकरीबन 5 साल अच्छा का जब मैं कराची आया, और उसके बाद से जो मेरा अर्ली इंटरेक्शन है, जो कराची की लैंग्वेज में हम कहते हैं कि पुल के इस पार और पुल के इस पार, सो मैं उस साइड से शुरू हुआ, जिसको हम इंटरसिटी माइग्रेशन भी कहते हैं। तो एक तरह से मैं शुरू वहाँ से हुआ और फिर पुल के उस तरफ पहुँच गया। और जो बिगिनिंग थी वो ऐसे हुई कि जो मेरी स्कूलिंग है वो भी हुसैनाबाद में हुई, और ये उन्हीं लोगों को पता होगा जो थोड़ा कराची को जानते होंगे, बाकी लोगों के लिए शायद ये बिल्कुल नया इलाका हो, लेकिन हुसैनाबाद बड़ी फेमस फूड स्ट्रीट है, और मेरी हाँ, इसीलिए फेडरल बी एरिया में। अच्छा, तो बिल्कुल चपली कबाब, फालूदे, बहुत कुछ है, मुझे भी ले जाए। तो वो बड़े मज़े की जगह थी। और वहाँ पे मैंने ये देखा कि वहाँ से मैं शुरू हुआ, तो मेरा जो अर्ली चाइल्डहुड है, और मैं इस पे बड़ा जोर भी देता हूँ कि मेरा अर्ली चाइल्डहुड मेरे मेमन दोस्तों के साथ गुजरा ज़्यादा। तो जो इंटरप्राइजिंग होने की थोड़ी बहुत जरासीम थे, वो मैंने अपने यंग एज में अपने मेमन दोस्तों से एक्वायर किए, क्योंकि मैंने देखा वो छोटी एज से ही काम पे चले जाते हैं, छोटी एज से उनकी ज़िंदगी में सिंगुलर ऑब्जेक्टिव नहीं होता, दे वेरी इंटरप्राइजिंग, which means that they don't only want to do one thing, they want to do a lot of things. For them, you know, making things for themselves matter. छोटे बड़े का कोई ख़ास काम में डिफरेंस नहीं है उनके यहाँ। आप छोटे से काम से शुरू करेंगे, you will give time and effort and you will get to a certain point where you deserve it, quite literally. तो वहाँ से शुरू हुआ, और उस स्कूलिंग के दौरान जो मैंने चीज़ देखी वो यही चीज़ें, कुछ बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी के बड़े अर्ली टाइम पे शुरू कर ली, जिनके अंदर यू नो फॉर एग्जांपल लोकल ट्यूशन से लेके लोकल यू नो घर में पुराने रिसालों को भेज देना। मैट्रिक के दौरान? हाँ बिल्कुल, इट वाज इवन अर्लियर, आई थिंक कि 8th ग्रेड या 7th ग्रेड में ही मैंने कुछ बिजनेस आइडियाज़ क्रैक कर लिए थे, और उनमें से ये था कि कुछ चीज़ें उन इलाकों में बड़े आराम से रीसेलेबल थी। तो फॉर एग्जांपल यूज्ड मैगजीन्स, हैड अ मार्केट। कौन से मैगजीन? पाकीज़ा, खवातीन डाइजेस्ट, शुआ। सो ये एक पूरी मार्केट थी जिसके अंदर अगर आपके घर में आता है वो मंथली, और वो पढ़ा जाता है 1 महीने में, फिर वो पढ़ा हुआ होता है, तो क्या करें? तो वो रद्दी बनने से अच्छा है कि यू गो टू अ प्लेस कॉल्ड करीमाबाद एंड यू ट्राई टू सेल इट, एंड इफ़ यू आर गुड इनफ एंड इफ यू हैव अ गुड नेटवर्क। उर्दू बाजार है करीमाबाद में, जो उनकी मेन मार्केट है उसमें तो खैर मीना बाज़ार है, लेकिन उसके ऑपोजिट एक पूरा एक जगह है जहाँ पे हफ्ते को इतवार को एक बुक स्टॉल लगते थे। दिस इज़ बैक इन दी अर्ली 80s, लेट 80s एंड अर्ली 90s। तो वो एक बड़ी अच्छी सोर्सिंग मार्केट थी, आप जाएं वहाँ पे जाके कोई भी चीज़ सेल करते हैं। तो वो वहाँ मैं जाया करता था, वहाँ से ही शुरू हुआ सारा कुछ कि यू नो उसके साथ फिर आई डोंट नो इफ़ यू फेमिलियर विद कराची के दरख्तों पे लगने वाले बादाम, बट देयर इज अ फेमस ट्री इंडियन बादाम। हाँ। वो हमारे घर में थी इत्तेफाक से। अच्छा। तो वो एक आप समझेंगे फैक्ट्री घर में लगी हुई थी, वो उस ज़माने में बिकता था, और पहले तो मुझे समझ में नहीं आया, तो बच्चे दरवाज़ा खटखटाते थे और कहते थे अंकल वो बादाम दे दें। फिर मुझे समझ में आया कि अगर इसकी कोई मार्केट है, तो मैंने जाके पता किया, तो वो काट के बिकते थे हुसैनाबाद में स्कूलों के सामने। मैंने कहा ये अच्छा है,
तो मैंने घर में से जमा करके धो धा के पैकेटों में डाल के अपने स्कूल में तोड़ के खाते थे। हाँ, हमारे स्कूल में नहीं था, तो मैं ही सप्लायर था अपने स्कूल में। तो मैं क्या करता था कि वहीं से घर से तोड़ ताड़ के, और मेमन बच्चे बड़े इंटरप्राइजिंग इस मामले में होते हैं, उनको पता है इसकी एक वैल्यू है, मार्केट में 2 रुपए का मिलता है, 2 बादाम ये आकिब दे देगा हमें 8 आने में या 1 रुपए में 4, क्योंकि मेरी कोई कॉस्ट नहीं थी, वो दरख्त लगा हुआ था, उससे टूटते रहते थे। तो वहाँ से शुरू हुआ, करते करते वहाँ से फिर ट्यूशन्स, वहाँ से फिर मैं कराची डीजे साइंस कॉलेज में मैंने कॉलेज किया, प्री मेड में। डीजे जो बंस रोड पे डीजे साइंस कॉलेज, डीजे साइंस कॉलेज। तो मैं वहाँ चला गया, वहाँ मैंने अपना इंटर वहाँ से किया। उसके बाद मैं कराची यूनिवर्सिटी चला गया, वहाँ मैंने फार्मास्यूटिकल साइंसेज में बैचलर्स किया। और वहाँ से ये थोड़ा ज़्यादा इंसाइट एक आई कि जब मैं उस इंडस्ट्री में प्रैक्टिकली गया तो वो मुझे थोड़ी सी ड्राई लगी, इन द सेंस कि वो हाईली रेगुलेटेड है फार्मास्यूटिकल्स, उनकी मार्केटिंग। आप उनके पास क्या कर रहे थे? मार्केटिंग में गए थे? मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट मैनेजमेंट में गया था। तो मेरा ऑल्दो मैंने वो करियर पास में देखा, तो मेरे वाले साहब भी फार्मास्यूटिकल्स में ही रहे। अच्छा। और बिफोर हिज डेथ इन 1996 ही वाज वर्किंग एट एप्ला लेबोरेटरीज एज अ मार्केटिंग डायरेक्टर। सो वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में ही रही, मैनेजमेंट। उनको मैंने बचपन से देखा, तो मुझे इसलिए फार्मास्यूटिकल्स में इंटरेस्ट था, क्योंकि मैंने घर में बड़ी कॉमनली लिटरेचर और डॉक्टर कम्युनिकेशन और उनसे कैसे बात करनी है वो मैंने बचपन से देखा। फिर वी वर एक्सपोज टू अ लॉट ऑफ मल्टीमीडिया, तो मूवीज़ एंड अ लॉट ऑफ लैंग्वेज ट्रेनिंग जो उस इलाके में मुझे आई, वो ये थी कि मैंने वो कंटेंट देख के सीखा जो आजकल बच्चे फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे देख के एक्सेंट बना लेते हैं या सीख लेते हैं। मैंने स्कूलिंग उर्दू मीडियम में की, तो इसीलिए मेरे लिए इंग्लिश थर्ड लैंग्वेज थी। तो मेरे लिए सीखने की एक एफर्ट थी मेरे अंदर कि यार अच्छा है, ये एक और लैंग्वेज आ जाएगी। सो वो मैंने अर्ली चाइल्डहुड में ही इसको गेज करना शुरू किया। और उसके बाद करते करते इस दौरान स्पोर्ट्स भी बहुत खेला, क्रिकेट भी खेला, सब कुछ किया। खैर फार्मास्यूटिकल्स के बाद मुझे थोड़ा लगा कि यार ये फील्ड ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए नहीं है कि लॉन्ग टर्म तो मैं इतना बोर नहीं रह सकता। तो मैं कंज्यूमर मार्केटिंग की तरफ आया। और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, दिस इज़ बैक इन 2003। एक साल का था मैं। हाँ, तो 2003 में मैंने पहली मर्तबा इस चीज़ की डायरेक्शन ली कि मैंने विदाउट एन MBA एट दैट टाइम, दिस वाज अर्ली, तो मैंने अपना इवनिंग MBA स्टार्ट किया ग्रेनिच में। CBM में शुरू में कुछ टाइम गुजारा, फिर मैं ग्रेनिच इवनिंग में चला गया। और मैंने ये किया कि मैंने दिन में जॉब ढूंढी। तो मैंने 1 साल काम किया होगा नोवार्टिस फार्मास्यूटिकल में, नहीं नोवार्टिस फार्मास्यूटिकल्स में। अच्छा, दिन ये वो है। और शाम में मैं ट्यूशन, आई वुड कंटिन्यू टू टीच। वो करते करते क्या हुआ कि फिर मुझे हुआ कि यार मैं कंज्यूमर मार्केटिंग में जाता हूँ। सो आई स्टार्टेड ऑफ विद अ कंपनी कॉल्ड मिलैक फूड्स। उनके फेमस ब्रांड्स है लाइक मिलैक और स्किम मिलैक और कोमेल। तो मैं वहाँ से मेरी कंज्यूमर मार्केटिंग की जर्नी 2004 के मिड में शुरू हुई। और मैनेजमेंट ट्रेनिंग से शुरू हुआ काम। और आजकल लोग समझते हैं कि बहुत जल्दी से बहुत ज़्यादा फेमस हो सकते हैं आप, बट यू हैव टू पुट इन अ लॉट ऑफ ईयर्स टू गेट टू वे यू हैव टू गेट टू। तो यहाँ से शुरू हुआ। यहाँ से मेरा एक्सपोजर टूवर्ड्स कंज्यूमर मार्केटिंग, रिटेल मार्केटिंग, FMCG, ऑफलाइन मार्केटिंग, TV, रेडियो, प्रिंट, आउटडोर एक्टिवेशंस, ये सारा वहाँ से मेरी लर्निंग उस कंपनी से शुरू हुई। वहाँ से फिर मैं फिर ये जर्नी, मतलब मेरा फिर फोकस बन गया कि probably my mentors at that time also kind of highlighted कि maybe you are good for marketing, so you should focus on marketing and utilize your skill. I was a very shy kid when I was young. I wasn't really public savvy, but I was enterprising, so I used to do network work, so ज़्यादा मुझे इंटरेक्ट ना करना पड़े, सप्लायर की तरह काम करो। बट बाद में फिर मुझे ये हुआ कि नहीं यार, वो ये एक्सप्लॉयटेशन MBA के दौरान हुई कि मैं बोल भी सकता हूँ लोगों के दरमियान खड़ा होकर। और मार्केटिंग में ये बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रेट है कि यू शुड बी एबल टू कम्युनिकेट इन आइदर वे। सो चाहे वो इंटरव्यूज़ हों, चाहे वो गपशप हो, चाहे वो सेल्स टीम से मीटिंग हो, चाहे वो ट्रेड मार्केटिंग हो, चाहे वो दुकानदार हो, आपको हर लेवल पे बात करनी है, क्योंकि FMCGs में प्रोडक्ट्स ह्यूमन इंटरेक्शन पे ही बिकती हैं इनिशियली, एंड देन यू हैव दिस पुश एंड पुल स्ट्रेटजी। वहाँ से फिर मैं आई वेंट टू अ कंपनी कॉल्ड ग्रीन स्टार सोशल मार्केटिंग, विच इज़ नाउ द रियल नेम इज़ PSI. It deals in family planning. I was a... So family, मुझे ऐसे समझ नहीं आया, family planning क्या मतलब? So family planning is that in Pakistan way back जो आपका population growth rate है मुल्क का, और मुल्क के जो available resources हैं, there's a balance between the amount of population that you can have, which would utilize the amount of natural and created resources that you have. Sometimes there is an imbalance between the amount of growth in population versus what you have as resources. So companies which have interventions in family planning, they would
their objective is to ensure that that people plan this as something that they would have to plan their lives. इसकी सादा ज़ुबान में ये है कि आप फॉर एग्जांपल आपकी शादी हुई, आपको वो चीज़ें प्लान करनी चाहिए, सोचना चाहिए, क्योंकि ये otherwise you'll add up to the load, not to the country but to yourself and to your family, and it is difficult to do this. So उस ज़माने में मेरी जो और ये जो नैक था, ये वहाँ पे इसको कंज्यूमर मार्केटिंग नहीं कहते थे, वहाँ पे इसको बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशंस कहते थे. और उसकी वजह ये है कि इसमें प्रोडक्ट बेचने से ज़्यादा जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो कॉन्सेप्ट है, और उस कॉन्सेप्ट को सेल करने के लिए you kind of get trained to learn that. So I was sent to a training. I got trained as probably one of the youngest people to be trained by John Hopkins in behavioral change communication. It was called a leadership in strategic health communication program. This is in Istanbul. It was conducted by our donors and तो जो NGO है लेकिन yes, so basically NGO might वो एक conventional word है, वैसे इन companies को social marketing organizations कहते हैं. पैसे कैसे बनाते हैं? So ये पैसे नहीं बनाती, ये बेसिकली इसको हम कहते हैं कि ये हाँ, तो ये बेसिकली बैलेंस करती है कि ये एट कॉस्ट काम करती है, और कोशिश ये होती है कि बजाय इसके कि इसको कोई इंसान प्रॉफिट कहे, इसमें प्रॉफिट नहीं है, इसमें बेसिकली जो कॉस्ट आपकी लगी है आप उसको रिकवर करने की कोशिश करते हैं. कॉस्ट रिकवरी. सो यू रिकवर इट थ्रू प्रोडक्ट्स बाय सेलिंग प्रोडक्ट्स बिकॉज दे आर सब्सिडाइज्ड. सो फॉर एग्जांपल इफ यू सेलिंग अ टैबलेट व्हिच कैन हेल्प पीपल फॉर एग्जांपल फैमिली प्लानिंग और एनी अदर रीजन, and it would cost you in a branded context like 50 रुपए की, so a subsidized product would be 10 rupees. So जो उसमें 40 रुपए हैं वो basically आपकी सब्सिडी है, and that subsidy is something that is supported by donors. Right, okay. अब क्या होता है कि जो सोशल मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन का काम है वो ये इंश्योर करना कि वो ये एडवोकेसी को कम्युनिकेट कर सकें लोगों को कि ये इसलिए इस्तेमाल करते हैं और ये सब्सिडाइज्ड है, and it's more of a volume place because you need to ensure के impact बढ़ाओ. इसके अंदर फैंसीफुल चीज़ें नहीं है, मतलब लक्स कम लोग भी ख़रीद लें तो आई थिंक इट्स ऑल राइट, बट व्हेन इट कम्स डाउन टू सीरियस थिंग्स लाइक दिस देन इट इज़ अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. तो वहाँ से ये चीज़ ये बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी थी, क्योंकि इसने मुझे जो 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट सिखाई, वो ये सिखाई कि ये चीज़ें डिफरेंटली प्लान होती हैं, ये कमर्शियल एक्टिविटीज़ की तरह प्लान नहीं होती, इनमें इम्पैक्ट की मेजरमेंट बहुत ज़रूरी होती है. And I was glad to see that मैं एक PSI हैकाथॉन में जज भी था. ये जो अभी हुआ था NIC इससे पहले वाला. अच्छा. जो पहला PSI हैकाथॉन था NIC कराची का ही था. So I was one of the judges and I was approached because I was part of PSI way back in 2006 to 8. So वहाँ हुआ. उसके बाद खैर मुझे वहाँ जाके लगा कि 5-6 साल में, जैसे मैं अभी तुम्हें कह रहा था ना कि कपड़ों के साथ और आउटलुक के साथ एक्सपेरिमेंट करना ज़िंदगी में, सो मैं भी उस वक्त एक्सपेरिमेंटेशन मूड में था. तो मुझे लगा कि यार ये साइड ज़रा बोरिंग है, ये तो सुबह शाम एक ही प्रोडक्ट है, एक ही बातचीत है, जीना मरना फैमिली प्लानिंग के साथ है. फन फैक्ट उस वक्त नहीं थी ना, तो बड़ी सबसे इंटरेस्टिंग पहलू उस पूरे किस्से का ये है कि मेरी कोई फैमिली नहीं थी अपनी, और जिन चीज़ों पर मैं डील करता था मुझे कोई I had nothing on it, right, honestly. But because I was a studious kid, so I kind of cracked it and just understood कि क्या होता है, researches क्या part बना. Marketing 101 कब सिखा रहे हैं? ये तो है अभी है. नहीं करें यार कभी, बहुत मज़े का टॉपिक है. वहाँ से फिर मुझे खैर लगा कि यार ये साइड बोरिंग है, तो मैं ऐसी साइड पे जाता हूँ जहाँ मुझे लोगों से डील करना हो, यानी कोई फ्रंट फेसिंग साइड चाहिए. ये बहुत हो गया बैकडोर काम. Although it was very good, I had a lot of fun. It was a very good opportunity. लेकिन मैं फिर एडवर्टाइजिंग एजेंसीज की साइड पे जाना चाहता था, क्योंकि मैं दूसरी साइड से इंटरेक्ट करता था और मुझे लगता था कि कुछ मिसिंग है नॉलेज में, कि मुझे ये नहीं पता कम्प्लीटली कि वो कैसे काम करते हैं. मुझे बाहर से पता है कि एक एजेंसी को आप ब्रीफ करते हैं, वो वापस जाते हैं, वो कुछ आइडियाज़ बनाते हैं, वापस आते हैं, प्रेजेंट करते हैं, कॉन्टेक्स्ट नहीं होता कभी उनके पास, कभी कुछ नहीं होता वगैरह वगैरह. खैर आई वांटेड टू एक्सपीरियंस इट माई सेल्फ, सो आई जॉइंड एन एजेंसी विच इज़ नाउ आई थिंक वेरी स्मॉल ग्लोबली, but it was once the world's oldest agency. It's called JWT. So back in 2006, 7, 8, it was one of the biggest agencies in Pakistan, along with Interflow and Low and Rauf. But this was the only and purely multinational agency. So it was run by a global office in Singapore. It was run by a global office in a regional office in Dubai, and we reported to independent teams in different countries. So वहाँ मैं गया एज एन अकाउंट डायरेक्टर, जो सिंगल अकाउंट या 2 अकाउंट के ऊपर काम करते हैं. और क्योंकि मैं वहाँ गया 7-8 साल के ब्रांड मैनेजमेंट के तजर्बे के बाद, तो मुझे छोटा सा एक एज मिला कि आई हैव बीन अ कस्टमर
So now I'm selling. And I know what I would do when I was at Milac. So I used to kind of not play that card, but because it was in me, so वो clients को भी बेहतर लगता था कि यार ये खुद भी client रहा है, इसको पता है हमारी तकलीफ, इसको पता है हमारे भी bosses हैं, इसको पता है हमारी कैसी, I don't know how much language I need to control, but हाँ हमारी जो अजीब सी जिंदगी है, basically वो ये था सर, मैं sympathizer था. तो मुझे शक्ल, मैं वही कहता था कि ये सामने से लगते हैं बड़े हीरो, अंदर कोई औकात नहीं कंपनी में इनकी. वापस जाएंगे, इनके ऊपर एक सीनियर ब्रांड मैनेजर होगा, उसके ऊपर एक ग्रुप हेड होगा, उसके ऊपर एक मार्केटिंग मैनेजर होगा, फिर एक मार्केटिंग डायरेक्टर होगा, उसके ऊपर COO होगा, फिर एक CEO होगा, फिर एक बोर्ड होगा. तो इस बेचारे की तो बेचारा ये तो ब्रीफ भी होकर नहीं कर सकता, मतलब इसकी तो वो ज़िंदगी है. खैर वहाँ जाके फिर मुझे ये लगा कि जो एडवर्टाइजिंग का बिजनेस है वो इस तरह से नहीं था जैसे ब्रांड मैनेजमेंट थी. वो काफ़ी फ्लफ थी, यानी कि इट वॉज वेरी वेरी सीरियसली बेस्ड ऑन रिलेशनशिप्स बट नॉट रियली कॉम्पिटेंस. सो ये जो गैप था, इससे मुझे ये सीखने को मिला कि यार अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मैं ब्रांड मैनेजमेंट को अप्लाई करूँ इन एन एजेंसी इन्वायरमेंट पे. अकाउंट डायरेक्टर्स आर काइंड ऑफ लाइक ब्रांड लीड्स एंड वो जिम्मेदार हैं क्लाइंट के, उसके काम के और उसके पैसे के. और ये चीज़ें मैंने करना शुरू की, लेकिन एज माई नेचर गोज, सो मैंने 1 साल ये काम किया, लेकिन मुझे लगा ये तो बड़ी ख्वारी है. आई हैड इंग्लिश बिस्किट्स, आई हैड यूनिलीवर, आई हैड कैंडी, क्या नाम था पहले उसका, मॉन्डेलेस जो पहले थी, कैडबरी. So I had these clients and I had a good time. I went to India. I shot in India, I think once back in for Softmints, an ad in Bombay when it was easy to. Bombay में shot. हाँ, दोनों गलत references हैं. But it was fun because वहाँ पे ये global exposure in the sense of global productions and global clients ये मिला. और बीच में मुझे शौक चढ़ा कि नहीं यार, I should go back to my roots which was brand management. So मैंने बीच में एक और stint ऐसे ही मारा कि मैंने कहा कुछ यार वापस जाता हूँ. तो I went up at Zulfikar Industries. Zill Limited, which is the producers of Capri soap, Pami, Capri, Opal. They make this is a soap company. So I went there. हाँ, तीनों. Capri is their biggest brand. It was a huge brand back then. It was, above 3 billion turnover a year. Rupees. And it was like, imagine it was 2008. So अब वो multiply. और इससे पहले उससे भी बड़े थे. खैर, वो मेरा interesting experience था, लेकिन हुआ ये कि वो then I got a call back from JWT to kind of rejoin after that 1 year. So I went back to advertising. And this was a good long stay. So I stayed there for almost 3 to 4 years. Or I was the youngest client servicing director for their Karachi office ever. I was 27 or 28. Wow. मैं सोच रहा हूँ कि कितने mid-30s में चले गए अभी तक. हाँ, तो इस वक्त तक मैं 20s. अभी 1 घंटे तक तो इनका और जॉब्स रहेंगे. नहीं हम फास्टर कर लेंगे. मैं पुराना मार्केटर हूँ, डोंट वरी, आई कैन डू इट इन मिनट्स. तो खैर वहाँ गए, वहाँ मैंने फिर वापस 4 साल गुजारे. वहाँ आई वर्क विद अ लॉट ऑफ ब्रांड्स इंक्लूडिंग नोकिया, लक्स, सनसिल्क, बहुत सारे LSA, बहुत सारी सेलिब्रिटीज़. लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि भाई कोई तस्वीर है उस टाइम की, तो मैं कहता था नहीं, मैं शैडोज़ में काम करता था. मैं तुम बच्चों की तरह पब्लिक नहीं हूँ. और अच्छा था, अल्लाह का शुक्र है कि फेसबुक नहीं था, वरना पता नहीं क्या होता ज़िंदगी का. उस वक्त सामने सामने ही आया था तो हम इतने एक्टिव नहीं थे और हम इन तस्वीरों को कहीं और पब्लिश भी नहीं करते थे. खैर वो मैंने बहुत अपॉर्चुनिटी भी नहीं करते आप? अभी भी नहीं करता. और उस ज़माने में तो आप सोचें जब बिल्कुल ही ब्लैक ऑप्स थे तो पता ही नहीं चलता था किसी को. अच्छा, लेकिन बड़ा मज़ा आया उस दौरान. ये हुआ कि जितनी भी सेलिब्रिटीज़ आज बड़ी हैं, आई वर्क विद ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम. आई थिंक एवरीवन, रीमा, मीरा, अदनान सिद्दीकी टू Fawad Khan to a lot of guys. मतलब I'm not forgetting the names, but everyone, most of you. क्योंकि लक्स ब्रांड था, सनसिल्क ब्रांड था, तो यूजुअली सेलिब्रिटी इंगेजमेंट्स वगैरह वहाँ ज़्यादा थी. उसके बाद खैर आई डिसाइडेड दैट एजेंसी में एक ग्लास सीलिंग है, उससे ऊपर आप नहीं जा सकते, क्योंकि एजेंसी में आप मैक्सिमम CEO बन जाएंगे, बट आपकी नौकरी वही रहेगी. यू विल बी आफ्टर ए क्लाइंट, यू विल ऑलवेज बी वर्किंग इन अ क्लाइंट इन्वायरमेंट, एंड यू माइट नॉट ग्रो एज फास्ट एज यू माइट हैव ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस. सो आई वेंट बैक to IBL basically. अच्छा. और IBL में वापस फिर मेरी वो जो IBL वाली जर्नी है, वो IBL गया. IBL में there was Habit, Dunkin' Donuts. I worked with the chairman and the board, stayed there for a while. और वहाँ पे फिर जाके बेसिकली मेरी फिर वो वाली बस हो गई कि यार अब ऑफलाइन बड़ा हो गया. अब हम आ गए 2011-12 तक. और उस वक्त तक मुझे लगा कि यार ये गेम तो ऑफ है, तो मुझे अब आ गई है FMCG, फॉर्मूला भी समझ में आ गया है, ट्रेड है, मार्केटिंग है, रिटेल है, मर्चेंडाइज है, लोग हैं, ब्रांड हैं, ऐड हैं, एजेंसी हैं. इट्स अ वेरी सिंपल प्ले. देन आई वेंट टू OLX. सो OLX उस ज़माने में बिल्कुल लोगों को नहीं पता था पाकिस्तान में क्या है. मुझे भी नहीं पता था एक्चुअली. फनीली इनफ मुझे कहीं जॉब ऐड नज़र आया, मैंने अप्लाई किया. वो एक कंट्री मैनेजर फॉर बिजनेस डेवलपमेंट थी एंड लॉन्च थी.
मैंने बस अप्लाई कर दिया. उन्होंने एक्सपीरियंस भी सारा FMCG का ही मांगा था. तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जिनको नहीं पता, वो ये कि OLX की हायरिंग में कोई डिजिटल स्किल्स की खास रिक्वायरमेंट थी ही नहीं. They didn't want any digital skills. लेकिन उस वक्त तो डिजिटल स्किल्स वाला अच्छा बंदा मिलता भी नहीं ना. नहीं थे, मतलब ऐसा नहीं है. उस ज़माने में भी जो अर्ली डेज थे उसमें थे लोग जो इस एनवायरनमेंट को समझते थे, और बड़े हमारे मशहूर दोस्त हैं अब तो बड़े बड़े काम करते हैं, उस ज़माने में भी थे. लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट ना होने की वजह कुछ और थी. उनकी रिक्वायरमेंट डिजिटल स्किल्स दे हैड. सो OLX इज़ ए नास्पर्स ग्रुप कंपनी. नास्पर्स जो ग्रुप है, इट्स अ $multi-billion ग्रुप बेस्ड इन साउथ अफ्रीका. और उनका वन ऑफ देयर बिजनेसेस वाज OLX व्हिच स्टार्टेड ऑफ इन बॉस्टन, और वहाँ से इन्होंने इसको एक्वायर किया और they then expanded to India, and the right next country was us. So they were looking, and all the Indian team basically had the background coming from mostly from technology and consumer marketing. So the early days of digital marketing were actually reliant on a lot of consumer marketing guys. And if I don't know how many of you are fan of Steve Jobs, but Steve Jobs' early mentor was Scully, and he was from Pepsi. And in the early days of marketing at Apple. And the reason is that, you know, digital to hum se, I still remember the statement that digital we can teach you in 2 weeks. What we can't teach you is insight mining. What we can't teach you is brand management. What we can't teach you is category development. What we can't teach you is public relations and, you know, networks and media management and millions of dollars to spend. So if you haven't done that, then it doesn't matter if you're the brightest digital child in Pakistan. What matters is that we need mature people. We need people who build brands rather than building, you know, metrics, in other words. But they taught me great. So I went to Portugal. I was trained in Portugal by the NASFIS Academy. And it was a 2 weeks exercise in Portugal where I met most of the global teams, even met the founders. I met Alec in Portugal. And that's where, you know, it all kind of converted my brain to kind of move away from FMCGs and focus on technology. And it's purely technology marketing to begin with, and internet-enabled businesses. And this is 2013. We launched in Pakistan. I stayed their country manager for launch. And I learned a lot about classifieds and digital in general. And I feel that back in 2013, the kind of language that I've developed with few interactions was beyond local capability at that time. Even the bigger agencies were a little afraid to take up a brand which have metrics. Where it mattered how many people downloaded the app, where it mattered how many impressions you get, where TV ads were transmedia measured so that your TV ad impact can be collated with your digital advertising spend, जो आज भी लोग struggle करते हैं, but it's measurement of impact of doing TV campaigns and digital campaigns and getting a result. उस ज़माने में we worked with a lot of agencies locally and globally. और उसके बाद से then I got to like this business. I went to Dawn. I stayed at Dawn for a couple of years. I was head of digital business. I was also head of classifieds. And I did a lot of ad sales. So this is my time where I got certified in media sales by IAB. And I started to sell. So I started to sell to Group M. Now, the funny thing is that all of this came into play because मेरे पास कुछ brand management का तजर्बा था. तो मुझे पता था कि media management companies के clients brand manager होते हैं. उनका मीडिया ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्योंकि मैंने भी की हुई थी मीडिया कैंपेन्स, OLX में भी की थी. तो मुझे पता था कि उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, वो क्या देखते हैं, कौन से मेट्रिक इम्पैक्ट करते हैं, क्या चाहिए. एंड देन विद द लर्निंग ऑफ OLX आई स्टार्टेड टू सेल इन्वेंट्रीज इवन बेटर इन द वे दैट आई काइंड ऑफ लर्न द इकोसिस्टम इन अ बेटर वे. डॉन के बाद देन यू नो देयर वाज अ टाइम टू नाउ टेस्ट आउट द मसल. इट वाज मोर सेलिंग एट दिस टाइम. OLX वाज मोर ब्रांड डेवलपमेंट. बट देन आई वेंट टू अ ग्रुप कॉल्ड TPL. TPL इज अ मल्टी कंग्लोमरेट ग्रुप, अ टेक्नोलॉजी ग्रुप. Famous companies include TPL Tracker. They're the oldest tracking company in Pakistan, 24 years. And so is the largest automotive insurance company, TPL Insurance. So I was a group head for marketing and comms. And my job was to take care of 8 to 9 companies with a marketing team to take care of the marketing objectives. And यहाँ पे वो जो testing of all the learnings that I had from my times at Dawn or my times at OLX all came into one single play. This is the same time when I started to experiment with doing something of my own. It's like that I've done that from my childhood. So I've done tuition, I've done tuition centers, I've done a lot of these work. But for the first time, we got to MYCART. So this was the first time when we engaged with my relationships with Asad and Ayaz and Adnan Asdar at Multinet, and we all came together to create
a 24/7 grocery startup back in 2015, and that kind of gave me a knack for startups, and because I had the digital base of doing it as a job and running campaigns, not just that I like to, but as a KPI. So I learned it, and then I tried to apply all that knowledge into the startups that I then worked with. उसी टाइम पे क्योंकि मैंने पढ़ाने का शौक था, तो I was teaching at Greenwich, I was teaching at Indus Valley, I was teaching at... वहाँ पे क्या पढ़ाए थे? Indus में मैंने मार्केटिंग पढ़ाई थ्रू आउट. सो मार्केटिंग इंडस में पढ़ाते हैं? इंडस में 3rd ईयर में कम्युनिकेशन डिज़ाइन में पढ़ाते हैं, एक सब्जेक्ट, एक कोर्स एक्चुअली, तो वो पढ़ाते हैं. उसके बाद ग्रेनिच में और CBM में तो जो आपके मेजर्स हैं, BBA में मेजर्स हैं मार्केटिंग के, इंटरनेशनल मार्केटिंग, इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग एक कोर्स सब्जेक्ट है, वो भी पढ़ाया. ग्रेनिच में पढ़ाया. Also in defense? Yes. CBM सो कुरंगी, और इंडस वैली में भी मैंने पढ़ाया. उसके बाद खैर ये जब मैं पढ़ा रहा था तो इस दौरान ये स्टार्टअप का काम शुरू हुआ और NIC कराची का आगाज़ हुआ जब मैं TPL में था. तो आई ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड दैट ये पहला, इससे पहले इस्लामाबाद में था, तो मैं इस्लामाबाद जा चुका था इससे पहले. सो आई डिड अ सेशन विद जोहे विद परवेज़ एंड ओवर देयर इन इस्लामाबाद. तो मुझे थोड़ा सा वो टीचर तो मैं था, तो मुझे मज़ा आया. मैंने कहा ये भी अच्छा है, तो अब सब कुछ पता है तो पढ़ा ही लेते हैं. तो मैं ये ऐसे ही पढ़ाता था. आई नेवर चार्ज फॉर दीज थिंग्स एट ऑल. एंड वो मुझे पढ़ाने का ज़्यादा चस्का था. तो खैर ये मैंने शुरू किया. अब साथ में स्टार्टअप्स बनाना भी शुरू कर दिया, ये भी किया. इसके अलावा मेरा और मेरी बेगम का एक भी स्टार्टअप है, विच इज़ ए बुटीक फिटनेस स्टूडियो फॉर द लास्ट आई थिंक 13 years और समथिंग. सो वो बेसिकली वो एक पूरा एक सेटअप है जिम का. माई वाइफ इज़ ए डॉक्टर, शी इज़ ए सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर, न्यूट्रिशनिस्ट एंड एन एक्सरसाइज थेरेपिस्ट. इसीलिए आप इतने फिट हैं? उनका अपना क्लिनिक भी. हाँ, तो वो स्टैंडर्ड्स ही कुछ ज़्यादा टफ हैं, तो वो हमारे घर में भी है सेटअप, तो वो भी मैंने शुरू किया. फिर देन बिकॉज शी इज़ द सोल because of that business, so she still runs it. We have a clinic too and DHA phase 6. तो वो भी काम चलता रहा. तो ये भी मैंने शुरू किया इनिशियल सेटअप, ये वेबसाइट्स फेसबुक सेटअप सब मैंने खुद ही किए. ये भी किया. फिर MYCART में, my part was automation, so my area was marketing. How many founders were there at MYCART? 4. So it was Adnan Asdar, Asad Abdullah, Ayaz Abdullah and myself. Okay, तो दिल्ली वाले 3 और एक आप. बस दिल्ली वालों का पसंदीदा. तो वो आई थिंक IBL की वजह से भी था, क्योंकि लेकिन दिल्ली वाले बन चुके हैं वो सब ऑलमोस्ट. सो आई वर्क विद ऑल ऑफ देम, मोनिस, असद, अयाज, सबके साथ. एंड राशिद साहब, आई रियली लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम. ही वाज माय chairman at IBL and he was my mentor, so I worked with him a lot. I really miss those times, and but it was really good. So that made me pursue this, and I did this also. इसी दौरान खैर जॉब्स चलती रही, क्योंकि मैंने कभी फुल टाइम इंटरप्राइजिंग काम उस तरह से फुल ऑन नहीं लिए कभी भी, और मैं करता रहा अपनी जॉब्स भी साथ साथ. तो TPL किया. TPL के बाद आई वेंट टू मल्टीनेट में आई वर्क फॉर अ वाइल, एंड पोस्ट मल्टीनेट देन आई वेंट टू वावा कार्स, which was my, in a way, like so you left MYCART and then went to why? Yes, so basically engagement थोड़ी मैंने reduce कर दी, but I stayed on the. And is it still online? Yes, it is. But it's. But why is it like nothing anymore? Well, there's a उसका एक अलग podcast है, तो वो. नहीं, ये थोड़ा सा एक सवाल है मेरा. So वो I think it happened, and then it kind of started and went down. When it started, there was a hype. There's a lot of hype because it was very unique in the beginning, but then a lot of market changed back then. So अचानक से ये हुआ कि from an Amazon kind of model, from a single warehouse and delivery across 24/7. Of course, it has cost implications, because if you're running a large warehouse for 24/7, it is a cost that you need to maintain. And how much was the initial investment? If I can't disclose the number, but yeah, there was investors and there were people who were, of मतलब course. बाहर से लोग इन्वेस्टर थे, सिर्फ ये नहीं था कि नहीं लोकल थे, लोकल इन्वेस्टर्स थे. नहीं, ऐसे लाइक सिर्फ IBL का नहीं, मतलब वो सिर्फ नहीं सिर्फ मल्टीनेट का नहीं. No. It has a group of investors, and वो हमने शुरू में स्टार्ट किया. और हुआ ये कि डायनामिक्स मार्केट के बहुत जल्दी बदलना शुरू हो गए. With us starting as the first 24/7 grocery startup, अचानक से then there was competition popping up. And interestingly enough, इस business की शुरुआत इस तरह हुई कि बहुत सारे distributors started to convert to this model, because it is very organic for a distribution to have offline presence, and then this was the online presence. And back in 2015-16, it was a way to go in the future. And you guys were only retail, not wholesale.
Yes. No. Of course, IBL had. IBL is a huge business. So. नहीं लेकिन MyCArt का बोल रहा हूँ. No. MyCArt also had like 2 wings. So there was a consumer which we call B2C, and there was a B2B angle as So well. you could have been Bazaar also. Could have been, yes. Could have been. But back then it wasn't really, in a way, when you look at it, things in 2014, it looked like there was a bigger opportunity in consumer हाँ, बिल्कुल. B2C. क्योंकि था Right? नहीं Because grocery startups थे ही नहीं. तो उस वक्त खैर पे players like Taza Mart, Q&E, they started to pop up. They were all part of different distribution houses, and they were offshoots, and they're great kids. So Osama Qasim from Q&E, and Taza Mart was a software company called Arpatech. They made a product, and they converted that product into a business. And what they did, in a way, that we were taking care of all of our deliveries ourselves, because back then there was no chunk of delivery riders that you can just acquire, right? So everything has to be either yours. So मतलब अगर आपने rider रखने तो वो rider employee होंगे, वो बाइकें आएंगी, वो सब होगा, गाड़ियाँ होंगी, वो सब आपका होगा. There was no agility वगैरह थे, लेकिन they didn't had solutions जिसमें आप पूरा आउटसोर्स कर देंगे, जो लास्ट माइल डिलीवरी है, तो वो नहीं था. तो वो आपको खुद करना था. तो बिजनेस मॉडल थोड़ा कम्बरसम था. और जो इसकी आउटपुट है, क्योंकि देखें कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में मार्जिन्स बहुत बड़े नहीं हैं. इट्स अ वेरी टाइट मार्जिन बिजनेस विद डिस्ट्रीब्यूशन कमीशंस एंड रिटेलर मार्जिन्स. देयर isn't really anything left. और जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है GM है, क्योंकि आप डिस्ट्रीब्यूशन है, तो you don't control that general gross profit from the brand. So for example, अगर आपके पास नेस्ले आया है और वो एवरीडे दे रहा है आपको ट्रेड प्राइस पे, तो आपने वही कमाना है जो बीच में. अब उसमें ये शुरू हो गया कि उसकी एक कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, और वो काफ़ी एक्सटेंसिव है. वेयर हाउस रन करना, स्टाफ रखना. That was the same from Korangi. उसी के अंदर जहाँ ये पूरा अरसे रहा, तो वहाँ पे. लेकिन then because when different people look at the same business, they come up with different innovation, which is amazing. Because when somebody from a software house looked at it, they looked at scalability. So their problem wasn't warehouses. They never fantasized about them, because in their line of business, it was software, right? Softwares enabled businesses. For them, the easy way to scale wasn't to do any of them, but actually just hire a third party globally, or nationally, to go ahead with. So they found things like Leopard, who could deliver to 333 cities. And suddenly, grocery became national. It didn't succeed that much, but this was one view, right? Bilkul. But then there was Q&E, which was also a distributor, and Q&E came out of Premier Agencies, which is a distributor, Premier Distributors. Like, for example, abhi a lot of people wouldn't know, but Burke Distributors is one of a very famous distributors for Nestle for I don't know how many years. But they own businesses like Spar. Burke के पास वो है ना, ये Spar. Spar, Bogo. They recently invested in Bogo. Then they got like 9 restaurant chains. Yes, I think Tao. China Grill. Yes. So it's a big group, and they recently invested in line with their business with amazing founders, ये Kareem and Shamsa. And Bogo, basically. So we used to just hang out a lot back in 2016. And this was the early days of startups, so it was fun to kind of talk to young, bright founders who were actually investing time, effort, and staying, So Kareem stayed with Bogo. It's been 7-8 years. He didn't give up on that. Kareem Taxi? No, the guy, uska naam Kareem Kabir. Oh, sorry. Yeah, Kareem Kabir. So Kareem continued with that, and it's a great startup. So ये distributors वगैरह इसमें आए, and that time ये dynamics change हो गए. But ये कि ये अच्छा learning time था कि grocery से हमने ये सीखा, फिर classifieds की कुछ learning थी, grocery की कुछ learning थी. And then, it came a time when, COVID happened, and a lot of opportunities were kind of like out of sight, suddenly. And because of my background in teaching or mentoring, what I always believed in and still do and probably will ever do is that I believe in a lot of talent in Pakistan. I always believe there's a lot of talent. Yes. I only feel it's just not fair to position them in a different way. And that what really drew me to make something during COVID, because I was also one of the affectees, because the jobs were being cut down left and center. Everybody was leaving everything, so there was no play. This is the first month of COVID back in 2020, and बिल्कुल हालात बिल्कुल ख़त्म हो गए थे. So what I started to do, which I do till date, which is I made a team augmentation, remote first marketing agency, which was
which never had an office. We still don't. It's a fully remote setup. We hire teams. We don't do projects. So we don't do like, एक website बनाते हैं, यूँ करते हैं. So we kind of engage strategically. And what I started to do is to find people who are relevant as well. So if you're a client that is a food delivery business, we will find you a marketing guy who is from food delivery business. If you're a bank and you want someone, a marketing guy from having a banking background, we will get you that. So you'll build a brand around the no, we will find people to augment their efforts. So for example, एक case in point है, for example एक company है और उसके पास ऐसी कोई assumption कि company है जो edtech है for example. अब edtech company है, founders हैं, वो शुरू में struggle करेंगे कि edtech को समझेंगे, right? They will have to apply experiments and have a lot of resources to understand acquisition costs, understand lifetime values, understand a lot of things that they need to experiment and do and, put some time on. What we used to do is we used to get guys who know the game already. So for us, it wasn't about that we don't know business. That's what 21 years of marketing would do to you, is that I knew people that could be very good fit for companies, but not fully. So I realized कि कोविड के टाइम पे पैसे भी कोई नहीं देता था, ठीक है ना, पैसे ही कम थे और people were basically firing full time teams. So basically ये उल्टा हो गया था. तो मार्केट में एक गैप बन गया था. वो ये था कि एजेंसीज की फीसें कम हो गई थी, मीडिया स्पेंड कम हो गए थे, लोगों की तनख्वाहें कम हो गई थी, टीमें फारिग हो गई थी. अच्छा, ये जो ऑन अ ब्राइट साइड व्हाट हैपेंड वाज दैट वी हैड अ लॉट ऑफ मार्केटिंग रिसोर्स, बिकॉज कंपनीज ने जो पहला डिपार्टमेंट बंद करने का प्लान किया वो मार्केटिंग स्पेंड से शुरू हुआ और मार्केटिंग टीम तक आ गया. पहला काम था जो बाहर पैसा जा रहा है उसको रोको, सो एडवर्टाइजिंग बंद करो या कम करो. सो अ लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली रिट्रैक्टेड. When you retract and you don't have money to spend, then you really don't need a marketing team. Then you basically either cut their cost or remove them and do something else. But isi time pe, we kind of came in as a plug-in service and we said, hey, do you want the experience of a C-level corporate and you want to pay half the price? And a lot of people said yes, because उनके लिए तजर्बा मैटर करता था और सबको रिजल्ट चाहिए थे. मतलब कोई इस वक्त इस रिस्क के मूड में नहीं था कि यार ठीक है बंदे रख लो उनको सिखा लेंगे. Nobody wanted to do this. Everybody thought that it's a waste of money and time. And ग्लोबली क्योंकि ये मसला हुआ तो ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुआ, ये यूएस में भी हुआ, ये कनाडा में भी हुआ, ये इंग्लैंड में भी हुआ, ये यूरोप में भी हुआ. वहाँ पे भी बहुत लोग कट ऑफ हुए. अच्छा, वहाँ के जो क्लाइंट्स थे they realized because they had countries like us who do a lot of offshoring. They started to come to a lot of Pakistani talent, and a lot of Pakistani talent actually in the last 3 years became full-time remote workers. And it was the first time that people had actually understood remote working. Fun fact ये है कि in 2013 OLX I was a fully remote employee. In 2013-14 the company was fully remote. I didn't have an office, I didn't have a sharing space. 2013 में. And I used to work from home, so purely work from home. और वो अच्छा था, स्मार्ट तरीका है कि पैसे एडवर्टाइजिंग पे लगाओ, दफ्तर पे खर्चा करने की जरूरत नहीं है, बंदे को अच्छे पैसे दो, मशीन अच्छी दो. मेरे अब्बा ने तो पिछले 25 साल से किया भाई. तो बिल्कुल क्योंकि इसकी वजह है ना, देखो ये कंपनीज लाइक OLX वगैरह क्योंकि ये यूएस स्टार्टेड थी, दे रियलाइज्ड कि यार ये जो कॉस्ट होती है ना, ये पैसे आप बंदे को भी दे सकते हैं. मतलब यू कैन जस्ट गिव द पर्सन लाइक $4,000 एंड से भाई खुद ही मैनेज कर तनख्वाह पता चल गई. इंटरनेट जो करना है, ये स्टैंडर्ड गोइंग रेट है यूएस का आजकल बड़ा अच्छा. सो ये आपको मिड लेवल पे मिल जाते हैं, बल्कि देयर आर कंपनीज व्हिच कैन गिव मोर देन $11,000 एंड $12,000. बट ये फुली रिमोट का जो स्टाइल था, तो मैंने इसको कैप्चर इस तरह से किया कि कोई OLX में एक्सपेरिमेंट किया हुआ था एंड ये मीट और जूम वर गेटिंग डेवलप्ड. सो अ लॉट ऑफ दिस वर्क दैट आई हैव डन ड्यूरिंग दैट टाइम फॉर 1 year full, I only did remote projects where I ended up with Meet Frank, which is an Estonian startup, and I started to do another product which was run your POC in the world's 5th biggest country. So, it was a very good claim. Pakistan is 220 million. Estonia is 1.4 million. Latvia is 1.2. And, so you can do the math. So for them, our Gulshan Iqbal was bigger than Estonia and way bigger. Actually, we had to cut down to like phase 6 maybe. Very good. Very good. Very much on time. I had some questions in between, मगर ये ना मुझे हर बार बोलता है कि मैं ये चीज़ ना बोलूं, लेकिन इस बार एक्चुअली ये हुआ कि मैं कुछ सवाल पूछने जा रहा था और खुद ही उसका जवाब सच में दिया. और thank you so much for coming. Thank you so much. It was an honor. Thank you so much. Looking forward to amazing things coming soon. Thank you so much. Thank you.